Prabhupada. I hope मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा. I don't know how to make it bigger, but Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Dhanavallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Jaya Gopi Dhanavallabha Jaya Giridharadhari Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Gajadanarayana Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Gajadanarayana Jaya Gajadanarayana Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Gopi Dhanavallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari
Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Thank you very much, all the devotees who are playing Kirtan. The sound is not clear, is that? Is it not clear? So can someone confirm? Ramesh Chandra Prabhu, can you please speak out? Can you hear me well or not? Yes, now audible. No audible. No, in between it was not, huh? Okay. Then let us start with invocation prayers and move on to chapter 3. ओम प्लीज फाइंड आउट द इन्वोकेशन प्रेयर्स. आप सब अपना भगवत गीता को खोल लीजिए. आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग ऑल द डिवोटीज टू be ready with the Bhagavad Gita book. Also be ready. Try to turn on your videos. It helps to get us more sincere participants in the class. So unless it's really emergency, and I'm sure it's not, so many people cannot have emergency for sure. Let's try to keep the videos on. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Saparantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta-pada-kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sasivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. Hey Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriyai Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asatyade Sutarine. Thank you. Hare Krishna. Very happy to see and welcome once again all of you. So today we will try to move on to chapter 3 of Bhagavad Gita. Did we complete chapter 2? Yes? Can someone say something from chapter 2? Something that we remember? Who will like to say? Chapter 2 में से कोई important points? Yes? We start with Anil Prabhu. I would encourage every devotee to, try to say something interactive, try to participate. It makes it more meaningful. We get new ideas, we get new points for discussion. It helps everyone when you share something. It's not only me who should share, everyone else should also share. Okay, let's hear from Anil Prabhu, who is leading us in this discussion. Yes, Anil Prabhu, can you just give one point, एक पॉइंट जो आपको सबसे अच्छा लगा चैप्टर 2 में से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। लास्ट टाइम जहाँ तक पढ़ा था 62 वर्ष तक, उसमें सबसे बेस्ट ये था कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए रहना चाहिए।
And you are talking from which verse? कौन से वर्ष से आप बता रहे हो? Verse number 61. 61. 1. Okay, yeah, it's a very nice, very important shloka. Tani sarvani samyama. Yes, very nice. So, and thank you. So we should use all our senses to satisfy Krishna, to please Krishna. Senses cannot be without engagement. हम senses के engagement को pause नहीं कर सकते. इस senses अगर जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है, वश में करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको उसके एक्टिविटीज को पॉज कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं. लेकिन वो टेम्परेरीली इम्पोजिशन होता है और जैसे उन इंद्रियों को वापस मौका मिलता है वो और ज्यादा विरोशियसली एक्ट करते हैं या फिर किसी और तरीके से एक्ट करते हैं. जैसे कई लोग कहते हैं कि हमने मौन व्रत रख लिया, मौन व्रत, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपनी जीवा को इंद्रिय वो नहीं करते, लेकिन इन कंप्यूटर पे बैठ के बहुत सारा चैटिंग कर देते हैं, तो उससे बात कर लेते हैं. तो कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियली वी कैनॉट stop the activities of our senses, and Lord suggests us that we should use the senses. Senses have to be used. Senses cannot be made inactive. हमें अपने senses को use करना है in service of Krishna. Someone was asking me another day in one of the classes कि जो senses के कारण इतना सारा कर्मा हो रहा है, कि जितना भी हम विकर्म भी हो रहा है ना, जो भी ये हमारे से एक्टिविटीज हो रही है, ये सारा सेंसेस के कारण है. सो व्हाई नॉट टू पॉज, सेंसेस की एक्टिविटी को बिल्कुल मिनिमाइज कर दें, पॉज कर दें, विच इज नॉट पॉसिबल. इवन फॉर सस्टेनिंग दिस बॉडी वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू मूव, सो विच विल इन्वॉल्व कर्मा, विच विल इन्वॉल्व सम एक्टिविटी. So the best course of action would be to use the senses in service of the Lord. In this way, we purify the activities of senses, and we also, by purification, by using senses in service of Krishna, we also purify our consciousness, because when we engage in service of Krishna, we also think about Krishna. When suppose you are making a garland for Krishna, any one of you has made a garland for Krishna ever? आप में से किसी ने कोई गार्लैंड बनाया कभी भगवान के लिए? Yes, Anil Prabhu is raising hand. Who else? No one. Maybe. Oh, Seema Shobha Mataji is saying yes. So when you are making a garland, Manish Prabhu is also saying yes. So when you are making garland for Krishna, you are also thinking about Krishna. What kind of flowers I should put? What kind of? It is not just the senses, the hands which you are using. You are also using your intelligence. You are also remembering Krishna. So when we use senses in service of Krishna, this helps us for the highest principle. Do you know what is the highest principle of life? Anyone? Can you all chat? Put a in the chat box. What do you feel is the highest principle of life? Please write down. You will get 20 seconds. Highest principle of life. आपको क्या लगता है जीवन का सब सर्वोच्च सिद्धांत क्या है? Let us try, and the time starts now. People are thinking. No replies yet. Bhakti for Krishna, someone says. Okay. Krishna ki seva, Krishna consciousness, to work for Krishna, Krishna bhavna amrit होकर काम करना. Okay, very nice. और कोई? Come on, सब कोई आंसर डालिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. Always places Krishna in the center. Yes. कृष्ण की सेवा. भगवद गीता का चल रहा था इसलिए सब यही बोल रहे हैं. Pray for welfare of people to Krishna. Okay, very nice. To satisfy Krishna, devotees to the service of God, Krishna. Okay.
Dasya bhavam, okay, to please Krishna. What about others? Krishna se prem ke liye prarthana. Become a pure devotee. Very nice. Very nice. Some more answers. Come on, come on. To Bhagavad Gita to learn Krishna. Approach Krishna's lotus feet through bhakti. Work for Krishna. Okay. Surrender to Krishna. Okay. Very nice. What else? Very nice. सभी आंसर में कृष्ण का नाम आ रहा है. दिस इज मोस्ट इंस्पायरिंग फॉर मी. सब लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं. सरेंडर टू कृष्णा, लव कृष्णा, बिकम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा. व्यवसायित्मिका बुद्धि. ओके, दिस इज लिटिल डिफरेंट. रमेश चंद्र को कह रहे हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि. ओके, एनीवन एल्स? लास्ट 5 seconds. यू कैन ऑल्सो पुट मोर आंसर्स, मोर देन वन. एक से ज्यादा भी आप लिख सकते हो. कैसे अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में लगाएं. ओके, ओके, लास्ट 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So we close. Wonderful. Last में आया कृष्ण भक्ति by doing good deeds. Okay. So to put our sense into Krishna. Okay. So आप में से जितने लोगों ने ये आंसर लिखा, कृष्ण भक्ति, टू प्लीज कृष्णा, टू यूज सेंसेस, एंड जो भी आपने लिखा कि टू become pure devotee of Krishna, all these answers are correct. But there is one thing, one principle, which we generally say is always remember Krishna and never forget Krishna. This is the kind of guiding principle. Anything and everything that we do, कुछ भी करें, कहीं पे भी करें, कैसे भी करें, the highest principle is to remember Krishna, to satisfy Krishna. और जो आपने सब आंसर दिए, they are all correct. It is different ways to say the same thing. But someone is asking question, how can we become pure devotee of Lord Krishna? So becoming pure devotee means, first of all, we have to understand. Thank you for this question. बहुत अच्छा question पूछा है. What is the meaning of pure devotee? This word is very, sometimes बहुत commonly use कर लेते हैं, pure devotee. What is the meaning of pure devotee? Pure devotee means his whole existence, his words, his mind, his actions, his intelligence, everything is just to satisfy Krishna. And he has no other desires but to satisfy Krishna. जो pure devotee का मतलब है, his 100% desire is to only please Krishna. And Srila Rupa Goswami explains, Anya abhilashita shunyam ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम. So this is the definition of pure devotional service. Uttama bhakti. Uttama bhakti means anya abhilashita shunyam. We put और all other desire जो हर समय 24 घंटे 100% कृष्ण को ही प्लीज करने के लिए प्रयास करते हैं. That is a pure devotee. How we will become a pure devotee? We can become a pure devotee by following the instructions of a pure devotee, by following in footsteps of a pure devotee. Someone has sent the message, Nikita Mataji, yeah, very, very relevant example. She's giving the example of Maharaj Ambrish. Savai mana Krishna padar vindayor vacham si vaikuntha gunanu varnane karo harir mandira marjanadeshu shutrim chakrachyuta satkathodaye. महाराज अम्बरीश अपनी पूरी सेंसेस को, हर चीज को कृष्ण का सेवा में यूज करते हैं. And now someone can ask, why we should use only in the service of Krishna? Why not welfare for everyone?
Why not feed the poor? Why not do this? Why not do this welfare activity? Why not this? Why not that? Can someone answer? Why most important activity for a living entity? एक जीव के लिए सबसे important living सबसे important activity है to please Krishna. Why? Why not do something else? Let us ask Nikita Mataji, who has given this answer. Mataji? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Mataji, Hare Krishna. हाँ, हम जब कृष्णा के लिए सब सेंसेस का यूज करते हैं, तो व्हेन वी वाटर द रूट्स ऑफ द ट्री, तो उसके सारे पौधे, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सबको ऑटोमेटिकली पानी मिल जाता है। इसलिए हमें रूट को ही ऑफर करना चाहिए सब सेवा। Exactly, very nice answer. अभी लग रहा है कि आप भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. So she is giving example from Bhagavad Gita itself, जो प्रभुपाद जी ने purport में quote किया है. Satisfying Krishna will satisfy everyone else also. Krishna tushte jagat tushte. If one please Krishna, he will satisfy the whole world, because Krishna is in everyone's heart. Just like by watering the roots of the tree, one waters every part of the tree. जब आप जड़ों को जल देते हैं, जैसे माता जी बता रहे एग्जाम्पल, तो आप टहनियों को भी, सब पार्ट्स, पौधे के सभी पार्ट्स को जल मिल जाता है. So that is like Krishna consciousness. Any other example someone can say? But we will spend 2 more minutes. These discussions are very important, because we should also remember what we are studying. It's not just to complete the course, right? Who else can give example? Yes, Sri Narayan ji, you want to give answer? हरिओम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Hare Krishna, Dhanvat Pranam. Yes, Prabhu. प्रभु जी, my understanding as per from the Bhagavad Gita and from your grace and blessings. So my understanding is Lord Krishna himself is Jagat. So whatever we are perceiving, whatever our senses are perceiving, so may we direct our whole senses, whether I am perceiving through eyes, may my eyes see Lord Krishna. Wherever my eyes, wherever my eyes are moving, if I am walking, so I should feel that I am not walking. The power of Lord who is within me, because of Him, I am walking, or I am able to walk. So whatever action we are putting forth, there must be a perfect understanding, or our understanding should be, or our understanding must be, that because of Him only, I am, whatever action I am putting forth, it is, the credit goes to Him only. So this bhavana, this feeling should be always. Very nice. So Hari Revo Jagat, Jagade ko Hari, Harito Jagato nahi bhinna tanu, iti asyamati, paramartharati, Sanaru Bhavasagara Santarati. Wonderful. Very nice. So always remember Krishna in everything that we do. Very nicely quoted. Very nice, Sri Narayan Prabhu. So yes, so this is the vision of a pure devotee. He will, everywhere he will see Krishna. If he will see the dark clouds, जैसे आज यहाँ पे गेटो नोएडा में खूब बारिश हुआ अभी थोड़ा देर पहले, so we see some clouds. By looking at the cloud, he will see, oh, this is Krishna, because he will see the color. Krishna's color is the color of the cloud, dark cloud. That is Krishna's color. If he will drink water, जब एक भक्त पानी पीता है, you know what he remembers? He says, Krishna says in Bhagavad Gita, I am the taste of water. So Krishna is the taste of water. Similar. So because everything is basically expansion of Krishna himself. There is nothing in this creation which is aloof from Krishna. The only problem is we are trying to become aloof from Krishna, and that is the root cause of all suffering. Do you understand this point, everyone?
This is one of the most important philosophical understanding that we should have. That actually, if someone is not surrendering to Krishna, then actually he's acting like a thief. Why? Because everything is around us belongs to Krishna. Isha Vasham Idam Sarvam. Everything material and spiritual belongs to Krishna. And if we don't surrender to Krishna, if we don't, give him that acknowledgement, then we are like thieves. Suppose I have my car, मेरा car घर के बाहर खड़ा है, it is my car. Someone takes my key and uses it. What you will say? Without asking me, you will say you are thief. Someone from outside comes and takes my car and takes it away. It's like thief because it belongs to me and he's using it without asking me. Similarly, everything in this creation is the property of Krishna. We don't possess anything. Even this body is a temporary, set of material elements which all again belongs to Krishna. This soul is also part and parcel of Krishna. So then nothing is aloof from Krishna. इसलिए एक जो शुद्ध भक्त है वो चारों तरफ कृष्ण को ही देख पाता है. Right now the sofa that you are sitting on, it does not belong to you, it belongs to Krishna because we never brought it. There is no proprietorship. When we come to this world, we are given temporarily this body to take care of this soul, to just like a vehicle. This human body is like a vehicle. It is temporarily given to us. Even this body does not belong to us. And what else can belong to us? Correct? So in this way, very nicely said, a devotee of the Lord, 24 hours, he is remembering Krishna. Now someone can ask, then when does he work? When does he do other things? If we only remember Krishna, you are saying always remember Krishna and never forget Krishna. If we remember Krishna 24 hours, what will happen to other activities? We have so many other things to do, is it not? We have to do our business, हमें अपना पढ़ाई करना है, कुकिंग करना है, हमें सोना भी है, हमें नहाना भी है, correct? But a devotee is expert. A devotee can use every situation and connect it to Krishna. If a devotee is cooking, अगर एक devotee cooking करता है, then he offers the bhoga to Krishna. And someone says by surrendering all his karma to Krishna. Yes. So whatever one does, he can connect it with Krishna. If someone is sleeping, then how he can connect it to Krishna? Can someone give the idea? अगर कोई सो रहा है, उसको कैसे कृष्ण से कनेक्ट करेगा? चलो भोगा तो आपने कुछ बनाया खाने का. साकेत प्रभु, do you take rest sometime in the day or night? Saket Prabhu, do you take rest in the night? Do you sleep? Of course you sleep. But then how can you connect it to Krishna? What my question? Yeah, Prabhuji, Dandan Pranam Prabhuji, we used to take a rest, but when going for taking a rest, also at that very time we remember Krishna, and remembering him, just going into the other world of where we don't know what is happening. Okay, very nice. So Prabhuji is saying सोने से पहले हम कृष्ण को याद करते हैं. Anjali Mataji is saying we dream of Krishna, but every day we don't dream. रोज दिन तो सपना नहीं आता है. Of course, if we 24 hours if we remember Krishna, we are reading Bhagavad Gita, तो काफी चांस है कि हमें भगवान का सपना आएगा. लेकिन but the understanding is also कि when we take rest, we are giving nourishment to this body, so that as soon as we are up, then this body can be used in service of Krishna. So in one way, the body is given the rest to be nourished, to be ready to serve Krishna. You understand that point? So even when we are taking rest, but
if we rest in a limit, not like Kumkaran. So what is the ideal standard of taking rest? Someone knows what is the ideal standard for a healthy body? How much rest should one take? Any idea? No idea. How much rest? जितना देर सो सकते सो जाओ. No. How much? Saket Prabhu says 6 hours. Yes. Tipshika Mataji says 6 to 8 hours. Yeah. For a healthy body, 6-7 hours should be enough. And if we are sleeping more than this, then actually we are wasting so much of important time. Or someone says 5 hours. Neera Mataji. Very nice. If you can reduce your sleep, and use the time in service of Krishna, then it is even nice. But we have to be practical. We have to see how much practically we can do, But for a healthy body, 6 hours, Srila Prabhupada says 6-7 hours is all right. More than that is like indulging in, then is more like getting more into ignorance, like that. So anyway, so we had some good discussions. We just discussed one point which Anil Prabhu said, and there are so many points, is it not? We can discuss, and this will never finish. But thank you, Anil Prabhu, for this point, and I think now we can move ahead. Is everyone okay? All of you are here? It's little doubtful for me because I cannot see many people. All those who are here, please write Hare Krishna in the chat box, and then let us see how many of you write. Quickly, Hare Krishna. Okay. Divya Mataji, Pulti Mataji. Okay, very nice, very nice. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, very nice. But कितने लोगों ने लिखा? I don't know how to count this. Okay, रेणु माता जी हैं, नीरा माता जी हैं, लक्ष्मी माता जी हैं, आरुषि माता जी, बबीता माता जी, सीमा माता जी, योगिता माता जी, Saket Prabhu, and many other devotees. So you're all there. And we also saw Gita Mataji this evening after many days, I think so. So welcome, and welcome back after your, I don't know if you're on vacations, Gita vacations. Hare Krishna, no vacation. I was taking care of 16 old age people, so I'm unable to join it. Yes, you're doing a lot of service to old people. Yeah, so, traveling most of the time, and there are no Wi-Fi in the old age home. So that is the way it is. So what is the best thing you can give to those old people? Because this body... I only teach Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, and gave 20 books to the youngsters who are coming there to serve, so that they can read. I can't go and read there. They can read there. They are more Sanskrit scholars there. Yeah. So they are into this, I think, in Hare Ram, Hare Krishna. Okay. So those guys are coming, girls and boys, they are coming there in Very Coimbatore, nice. Salem, and Madurai. So excellent. Thank you so much, because that is the best gift you can give to these people. In fact, this is the best gift for anyone to give. If you want to give anyone something best, you give him Hare Krishna, because that will perfect his or her life. Okay, wonderful discussions. Now moving on to chapter 3, Bhagavad Gita, chapter 3, and we will cover a small portion of chapter 3 this evening. Thank you, Gita Mataji, for inspiring us. And with that, we are ready to go. I seek all of your blessings so that we discuss this for the pleasure of the Lord and his devotees here. So there are total 43 shlokas in chapter 3. Chapter 3 mein total 43 shlok hain, and we will be covering today. Let's see, we will try to cover maybe around 13-14 shlokas from this. So then let's go to text 1. So what we will do this time in chapter 3, first we will recite the whole translation of all the verses. पहले हम पूरे verses के एक बार translation को खाली पढ़ लेते हैं, so that we know how this chapter 3 is a very important chapter called Karma Yoga. Karma Yoga.
And so what we will do, we can start by reading first all the text, the translation quickly. It will take us few minutes, and then that will prepare us for this chapter. So who would like to read the text here? Hmm. Same names coming only. Okay, let's hear from Dipshika Mataji. Mataji, can you recite 10 shlokas? पहले not shlokas, 10 translation जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा. Dipshika Mataji, you can unmute and say. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mataji, please go ahead. Arjuna said, O Janardana, O Keshava, why do you want to engage me in this hastily warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? Shall I read the next one? Yes, please go ahead. Okay. Number 2, my intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. Number 3, Shri Bhagavan Uvach, the Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, and others by the devotional service. Number 4, not by merely abstaining from work, one can achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone, one can attain perfection. Number 5, everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Number 6, one who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. 7, on the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Number 8, perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. 9th, work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from the bondage. 10, in the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of man and demigods along with the sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yajna, means sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. Next 11th also? Yes, Mataji. Okay. The demigods. Up to 14th you can read, yeah. Okay. The demigods being pleased by sacrifices will also please you, and thus by cooperation between man and demigods, prosperity will reign for all. Number 12, in charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna, means sacrifice, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. Number 13, the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Number 14, all living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by the performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. Okay, thank you so much, Mataji. So what, we will only read till 14 shlokas and then we try to go to text 1. हम text 1 की ओर जाते हैं. I hope my screen is visible. All of you are on mute. I'll unmute you. So you please keep yourself muted, and whenever necessary you can unmute and speak. Okay. So
So we'll go by this shloka. Someone can, you can also repeat after me, unmute and repeat after me. Arjuna Vacha Arjuna Arjuna Vacha Vacha Jaya Sri. Dayashi Better. letter. Chet if If Dharmanaha Karmanaha then fruitive activity action. that will be the action Te you by you. Mata Mata considered considered Buddhi Buddhi intelligence intelligence. Janardana Janardana Krishna. O Krishna Tat Tat therefore therefore why Why? Karmani in Karmani action in action Ghore Gore ghastly Gastri Mam me Me Niyojasi Niyojasi you are engaging You are engaging Keshava Kesava O Krishna. Oh O Krishna. Krishna. Translation Arjuna said, O Janardana, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? Purport. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in previous chapter, with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. And the path of realization has been recommended Buddhi Yoga or Krishna consciousness. So, if we go back to the history, of what we have covered so far, अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे, so it looks like this. I will share this slide. It looks like this. Chapter 1 में हमने observing the armies, आप सबको याद है chapter 1 में क्या क्या हुआ था? It was about observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. Different soldiers were described. Arjuna was asking very important questions which are all very relevant, very intelligent questions, and Arjuna was getting confused and he did not want it to fight. He was giving very valid reasons why this war should not happen. In chapter 2, then it was a bigger discussion. Chapter 2 we discussed is one of the most important, Bhagavad Gita का सबसे one of the most important chapters, एक बहुत मुख्य chapters में से है, और उसमें हमने देखा कि अर्जुना इनडिसिसिव है, वो सोच नहीं पा रहे, and then Arjuna surrenders to Krishna, and then Krishna gives him the most important instructions, and these instructions are regarding the science of soul. So in the previous chapter we understood that we are not the body and we are the spirit soul, and Krishna also explained him about what are the various possibilities to act. आप देखेंगे जो लास्ट चैप्टर में, अभी इस चैप्टर में भी आगे ऐसा ही डिस्कशन चलेंगे कि नाउ अर्जुना वांटेड टू गेट सम क्लैरिटी, क्योंकि उनको अर्जुना इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इट्स लाइक इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस. कभी अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मुझे काम करना ही नहीं, क्योंकि काम करने से कर्मा होगा और कर्मा से फिर उसका रिएक्शन होगा. सो और खास तौर से ये जो एक्टिविटी होने वाला है, दिस इज ghastly warfare, which is like which is for sure that if this war will happen, many thousands and thousands and thousands of people and soldiers and horses and elephants and so on will be killed. It will be a mass killing of people. और अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे आज के श्लोक में, कृष्णा, why do you want me to engage? कृष्णा को बोल रहे कि कृष्णा,
why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? He says that, you know, it is becoming so difficult for me. And Arjuna wants to get some clear instructions from Krishna. Srila Prabhupada ji explains very nicely, and that after explaining the science of soul, with a view, why science of soul? With a view of delivering Arjuna from the ocean of material grief. So this is a very important one line, very powerful. Why? As long as we are on the bodily concept of life, जितना समय तक भी हम bodily concept में हैं, in me, my body, my family, my extended family, and even the bigger purview of my extended family, ये सारा मैं मेरा परिवार, मेरा ये body, ये सारा क्या है? This is the material conception of life. Anyone who is in this material conception of life, whoever he may be, he will never be able to come out of the he will not be able to be situated on the platform of real happiness. Why? Because of the misidentification. जब तक व्यक्ति अपने आप को ये बॉडी और इस बॉडी के जो एक्सटेंडेड रिलेशन से देखता रहेगा, he will never be able to find true happiness and satisfaction because he is on a wrong platform. कई बार हमें ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आता है जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं and we see that we have landed into other problems. We try to, the solution becomes the bigger problem than the problem itself. So, because that is the nature of this material world, because of the false identity, like a thief can never be happy. एक thief चाहे एक शहर में चला जाए चाहे दूसरे शहर में चला जाए, उसके मन में हमेशा डर लगा रहेगा. जैसे पुलिस को देखेगा उसके मन में डर लगा रहेगा कि पुलिस कहीं ना कहीं मुझे पकड़ लेगा, कहीं मुझे ही पकड़ने आएगा. So as long as one is a thief, one cannot be happy. Similarly, as long as one is in the material concept of life, he will never be happy. The solution, so here, यहाँ पे भगवान अर्जुन को कोई false hope नहीं दे रहे हैं. अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, नहीं ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, कोई बात नहीं, पहले भी तो हुआ है, आपके साथ भी तो ऐसा हुआ है. He is not giving him the false hope. Krishna is giving him the absolute knowledge. और ये absolute knowledge is so powerful that it can completely take us out of all lamentation, all fear, and all misery. ये जो absolute knowledge का platform है, it situates us. It is a platform of knowledge. It's a platform of true knowledge, जिसमें we can easily overcome our lamentation, fear, and we can be situated in the platform of real happiness. क्योंकि हमें पता होगा, when we are not the body, we are the soul. We know that we will never die. We know that this changing body, that the changes in the body, they will happen because this body is temporary. I was remembering one funny example. एक बार की बात है, there was one lady and she was quite healthy, or I don't know how to say it. She was quite heavy. She was like 100 kgs plus, and she was very upset because everyone was saying you are moti, or you are so, you know, you need a bigger seat. People, you know, people will always taunt you for different reasons. And this lady, one time she came to one class on Bhagavad Gita, and the speaker was giving an excellent class, और जो उसका topic था, उस class का topic था that how we are the spirit souls and how we are the servants of Krishna and how we are not the body. And this lady was attending the class very sincerely. बहुत ध्यान से lady उस class को सुन रही थी. And after the class was over, you know, everyone was going away, and this lady
reached out to the speaker. उसने speaker को कहा, sir, I have something to share. Today I became so happy. I am so happy. I am fully happy. And your class was so nice. You have given me a new life and like that. The speaker was saying, मैंने तो इतना कुछ बोला ही नहीं आज की क्लास में. Why she is becoming so happy? And you know this lady, she said, today I learned. Everyone calls me that you are so fat, you are so moti, and today I understood that I am not the body. I am not the body. So even if I am fat or double fat, how does it matter? So my understanding is clear. अब मुझे कोई भी कुछ भी बोलेगा, I am not worried because I am not the body, and this is only the body. So like that, you know, just one clear understanding of our real identity can help us save so much of anxiety. Material world के जो solution है, they are stopgap solutions. आपको इस चीज से मुश्किल हो रहा है तो ये चीज कर लो, उससे फिर एक और मुश्किल है. But the spiritual solution is right hitting the problem at the root cause. The root cause is what? The root cause of all the problem is material conditioning. The root cause of all the problems is that we have forgotten our identity. Just like a child, a lost child in a मेला. अगर एक मेले में एक छोटा बच्चा खो गया है, आप उसको लॉलीपॉप दे सकते हैं, उसको चॉकलेट दे सकते हैं, कुछ टॉयज दे सकते हैं. He can be happy for some time. Again, he will feel bad. But the best service that you can do to that child is to try to find his parents and connect him back to his parents. Is it not? अगर एक बच्चा मेले में खो गया है, उसके लिए आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो? आप उसको खिला सकते हो, गोलगप्पे खिला सकते हो, थोड़ा देर अपनी गाड़ी में घुमा सकते हो. But that will not solve his problem. The problem is that he wants to. Do you all agree? कि उसके लिए best solution यही है कि find his father or parents and give him back. He will get everything that he needs. Similarly, if the living entity which is hankering for happiness, अगर ये एक पॉइंट हमें समझ आ जाए ना, हमारा लाइफ चेंज हो जाए. यही एक ही पॉइंट समझ नहीं आता. इवन हम इस पॉइंट को बोलते भी हैं, बताते भी हैं, सुनते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन एक यही पॉइंट हमें बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा है कि जो रूट प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, इज मूविंग अवे फ्रॉम कृष्णा, एंड द सॉल्यूशन to the problem is connecting back to Krishna. This is only one formula. If we remember, then all the problems in the life are gone. Just like I was asking Gita Mataji, and she says she is giving them only Hare Krishna. That is the real solution, because that is going to help them to not get this body again. Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram. Otherwise you can give them any comfort. उनको आप कितना भी अच्छा फैसिलिटी दे दीजिए, कितना भी अच्छा सब कुछ दे दीजिए, अगेन उनका दूसरा जन्म होगा. अगेन इट विल बी प्रॉब्लम. आपने उनका प्रॉब्लम अगर 10 दिन के लिए सॉल्व भी कर दिया तो अगला बॉडी फिर रेडी हो जाएगा. सो द बेस्ट थिंग, इसलिए बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट गिफ्ट. सेम गिफ्ट कृष्णा इज गिविंग टू अर्जुना. सो हियर एक ही लाइन ये हमें समझ आ जाए तो आज का लेक्चर सफिशिएंट है. दैट so here he says, Supreme Personality of Godhead Shri Krishna has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter with a view of delivering his intimate friend from the ocean of material greed. And the path of realization has been recommended, Buddhi Yoga. Now, Prabhupada is also explaining one very nice point. Sometimes लोग सोचते हैं कुछ बार की कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब आप लोग निठल्ले हो जाओ या सोसाइटी से अलग हो जाओ या you go to a secluded place and become fully absorbed in Krishna. But Srila Prabhupada says that is not the right thing, especially for neophyte people. Without being trained in philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable. So the most important thing, especially in the beginning stages and even quite longer in the journey, is to be in association of devotees. When we are in association of devotees, जब हम भक्तों के संग में होते हैं, तब पॉसिबल है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स को डिस्कशन करना और उसको याद करना. अभी जो हम स्टार्टिंग में डिस्कशन किए थे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. आप बोलोगे इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा.
All both are same. So the principle is made because it is like sufficiently emphasizing that we should always remember Krishna. Don't forget. जैसे कि कई बार आपकी वाइफ, जो लोग यहाँ मैरिड हैं, वो आपको बोलती हैं कि आप आज पनीर लेके आना ऑफिस से आते हुए, दुकान से, या सब्जी लेके आना, और फिर जब आप निकल रहे होते हो फिर बोलते हैं डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग सब्जी, दोबारा बोलते हैं. So it is the same statement, but it is re-emphasizing. So therefore, the most important emphasis of all the scriptures is to help us to remember Krishna. And devotees association is the best place where we get this opportunity to remember Krishna. Like that. So Arjuna सोच रहे थे कि it's something like retirement होगा. कृष्णा कॉन्शियस का मतलब रिटायरमेंट है ना, रिटायरमेंट भौतिक एक्टिविटीज में एंड नहीं. सो कृष्णा इज सेइंग नो, यू हैव टू बी, इट इज नॉट ए रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफ, इट इज ओनली टू dovetail our propensities and connect it to Krishna. Are you understanding? This is the most confusing point for most people. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भक्ति का प्रोसेस मतलब ये तो गया, ये तो साधु बन गया, ये तो अब घर बार छोड़ देगा, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं. बट भक्ति का प्रोसेस इज नॉट टीचिंग अस लाइक दिस. कृष्णा अर्जुन को ये टीच नहीं कर रहे दैट यू लीव द बैटलफील्ड एंड यू बिकम ए सन्यासी और साधु. नो, कृष्णा इज नॉट टीचिंग दिस टू अर्जुन. इवन दो अर्जुना इज वांटिंग दिस, अर्जुना इज सेइंग दैट आई कैन लिव बाय बेगिंग. हम लोग भीख मांग के रह लेंगे, है ना. जो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुना इज सेइंग दैट आई विल नॉट फाइट, बट कृष्णा इज सेइंग नो, यू मस्ट फाइट. This is real Krishna consciousness, and not doing activity is not a karma. We have to be engaged in service of Krishna. So here it says, but as a sincere student, now how do we get solution? We get solution by becoming a sincere recipient of instructions. Jaise Arjuna, as a sincere student, he placed the matter before his spiritual master and questioned Krishna, and Krishna then elaborately explained karma yoga or working in Krishna consciousness. थर्ड चैप्टर में भगवान इसको प्रिंसिपल को समझा रहे हैं. क्या प्रिंसिपल को समझा रहे हैं? कि डू नॉट गिव अप द वर्क. आपको काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है. You make your activities Krishna conscious. In every activity, जो हम लोग पहले भी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, this point Krishna is emphasizing again and again and again. आप देखोगे यहाँ पे, now he is saying I am confused, I am lost. अर्जुन बोल रहे हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में कि I am bewildered by your equivocal instruction. एक जैसा सा लग रहा है. And therefore please tell me decisively which will be most beneficial for me. Okay, so in this way Arjuna is placing his submissive inquiry again to Krishna, and now the Lord is saying Shri Bhagavan Vacha. In the text 3, Lord Krishna is, so we are only touching a few sections of few text so we get the overall understanding. Of course जब आप पढ़ेंगे इस बुक को तो you should read word by word, right? Not just like we are. So in this way, now Krishna is saying, the Supreme Personality of Godhead said, "O sinless Arjuna," so these Pandavas, the suffering that the Pandavas are having is not because of their sin. It is also mentioned in Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 9, that कि जो पांडवों को जो suffering मिल रहा है, it is not because of their sinful activities. They are sinless. You see, Krishna is saying, "Oh sinless Arjuna," there is no sin. If you look at the life of Pandavas, अगर आप पांडवों के जीवन को देखोगे, there is nothing except suffering. From the very childhood, they lost, they were, it was so difficult for Kunti Devi to bring them up, to grow, and then they were brought in that royal household, but they always were fatherless, even though they had, facilities to stay. And then Duryodhan became so envious,
and then so many things happen. You know that how many trials, tribulations, and anxieties Pandavas have to go. Then someone was saying कि Lord Krishna was once challenged. भगवान को challenge किया, Krishna, looking at the life of Pandavas, no one will become your devotee. क्योंकि Pandavas had to go to so much sufferings, is it not? So Krishna, so why? Because Krishna is not a cheap personality who will give us something to just make this life better. अभी का कुछ जो temporary enjoyment के लिए हमें कुछ facility दें. Krishna is not like that. Krishna is interested in our real welfare. Just like the parents are always thinking of the real welfare of the child. Suppose एक बच्चा है, उसको आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है और उसका गला खराब है पूरी तरह से, एंड उसको जो एक पड़ोस वाला है अंकल, वो पड़ोस वाला अंकल, वो कुल्फी वाला आया, आइसक्रीम वाला, उसने अंकल ने आइसक्रीम लेके दे दिया, और उसके जो पापा हैं या उसकी मदर है वो उसको आइसक्रीम लेके रो रहे हैं, ही इज इन टीयर्स, रो भी रहा है, लेकिन उसके पापा उसको आइसक्रीम लेके नहीं दें, क्योंकि हिज फादर नोस कि आइसक्रीम वाला भी उसको आइसक्रीम दे देगा, जैसे वो पैसा देगा आइसक्रीम वाले को, he will pay, he will give him ice cream, he will not say no, but his father will say no. Why? Because he is his real well-wisher. उसको पता है इसका गला पहले खराब है, अगर मैं इसको आइसक्रीम दूंगा तो और खराब हो जाएगा गला. You understand? So Krishna is like our real well-wisher. आप कृष्णा को प्लीज कर भी दोगे तब भी कृष्णा, अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी नहीं है, कृष्णा विल नॉट गिव यू. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड द अदर डेमीगॉड्स. जो बाकी देवी देवता हैं, अगर आपने अपना ड्यूटी किया, उनको वर्शिप किया, जो भी उनको आपने सेटिस्फाई किया, दे विल फुलफिल ऑल द डिजायर, चाहे आपके लिए वो अच्छा हो चाहे खराब हो. बट कृष्णा इज, बिकॉज दे आर बाउंड बाय दैट लॉ, दे आर बाउंड बाय दैट लॉ. जैसे कि अगर आपने बैंक में पैसा रखा है तो आप चाहे अच्छे हो चाहे आप खराब हो चाहे कैसे भी हो, बैंक इज बाउंड टू गिव यू इंटरेस्ट, इज इट नॉट? बैंक ये नहीं कह सकता है कि आप जो है ऐसा कार्य करते हैं, सिगरेट पीते इसलिए मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा. बैंक विल नॉट से लाइक दिस, बैंक कैन नॉट से लाइक दिस, इज इट नॉट? सो डेमीगॉड्स आर लाइक, जो अलग अलग डेमीगॉड्स मतलब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जो बाकी सारे देवी देवता हैं उनको बोला जाता है डेमी गॉड्स, DEMI, डेमी गॉड्स, जो देवी देवता अलग अलग. So the demigods, they will give you quickly whatever the returns of your tapasya, but Krishna will not give you the returns of tapasya if it is not good for you. Do you understand? This is a very important point. आप लोग बोलोगे कि हम तो कृष्ण भक्ति करने की कोशिश कर रहे हो और आप कह रहे हो कृष्ण हमें देंगे ही नहीं. Yes, so this is क्लियर. कब नहीं देंगे? जब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है. और हमारे लिए अच्छा है तो जैसे उस बच्चे के लिए अगर अच्छा होता है आइसक्रीम खाना तो उसके पेरेंट्स उसको खिला देते खुशी खुशी, लाइक दैट. सो कृष्णा इज नॉट बाउंड बाय द रूल्स टू गिव अस बेनेडिक्शन whether it is good for us or not. Do you remember the story of Bhasmasur? Do you remember Bhasmasur? किसी को याद है? किसी को याद है? Yes, दीपशिका माता जी, what happened in Bhasmasur's case? भस्मासुर, हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes, माता जी. भस्मासुर एक राक्षस था जिसने देवताओं को प्रसन्न करके ये, शिव जी को भी प्रसन्न करके ये वरदान ले लिया था कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा. Yes. तो सभी उसने कहा कि, और जब शिव जी ने उनको ये वरदान दिया तो उसने कहा कि मैं सबसे पहले ये टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे वरदान दिया है वो फलदायी है या नहीं. तो इसलिए वो भगवान शिव के पीछे ही भागने लगा. Yes. तो भगवान शिव ही थोड़ा परेशान हुए कि कैसे मैं इसको अपना पीछे छुड़ाऊं, मैंने इसको वरदान दिया और ये मेरे पीछे पड़ गया है. तो उसके बाद उन्होंने अपना वो नृत्य करना शुरू कर दिया. आई थिंक फिर उन्होंने, विष्णु जी ने उनको बताया था कि आप नृत्य करिए, और उन्होंने डांस करा, अपने सिर पे हाथ रखा, तो भस्मासुर ने उनको कॉपी करते हुए अपने सिर पे हाथ रख लिया और वो खुद ही भस्म होके मर गया. Yes. So अभी रमेश जब आप बता रहे थे तो रमेश चंद्र को ऐसे हाथ भी रख रहे थे, बट ऑफ कोर्स उनके हाथ रखने से फटेगा नहीं हमारा सिर. So he was showing like the story. So yes, so in this way we see कि जैसे भस्मासुर हैं तो even if it is not good for it, he was given that benediction. उनको ये दिया गया था.
So demigods will give us the benediction according to हमारी तपस्या के हिसाब से वो हमें उसका रिजल्ट दे देंगे साथ के साथ. But Krishna will not give us that result if it is not good for us. But what will Krishna give us? Krishna will give us the highest fortune of becoming his pure devotees and then crossing over this ocean of birth and death, the cycle of birth and death, इस birth और death के cycle को cross कर देंगे Krishna. And so he will, so therefore Krishna's relationship, so why we are discussing this point? We are discussing this point here in so much detail so that we understand कि जो कृष्ण के डिवोटी है, they are not just just like a businessman with business dealing with Krishna. अगर कृष्ण को कोई वर्शिप कर रहे हैं, we should not have a business mentality. इसलिए हमने, why this point came? This point came because Arjuna is addressing Pandavas as sinless. आप पाप से मुक्त हैं, लेकिन पाप से मुक्त हैं तो पांडव इतना सफर क्यों कर रहे हैं? हमारे पास भी ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि मैं पाप, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है भीष्म देव, भीष्म पितामह gives this answer in श्रीमद् भागवतम, and he says कि आपका जो कर्म, आपका ये जो सफरिंग है, it is not because of your karma. आपके कर्म, खराब कर्म की वजह से आपको ये सफरिंग नहीं मिल रहा है. It is because of the influence of the inevitable time. वहां पे भीष्मदेव बताते हैं कि जो काल है, उसका जो inevitable factor है, उसकी वजह से आप लोगों को ये सारा सफरिंग्स लेना पड़ रहा है. It's not because of you. और यहाँ पे भी भगवान कृष्ण अर्जुन को sinless कह के बुला रहे हैं. इस तरह से so Lord is then addressing Arjuna, O sinless one, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand by empirical philosophical speculation and others by devotional service. अब भगवान बता रहे कि दो तरह के लोग हैं, और अब भगवान बताएंगे. If someone can read the purport, it's a very important, nice purport. Can someone read? कोई पढ़ेगा purport को? हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. हिंदी में बुक है किसी के पास? हम आज इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं भूल गया था. रेणु माता जी पढ़ेंगे हिंदी में. यस माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रणाम. सॉरी प्रभु जी, एक बार आप श्लोक नंबर बताएंगे? यही जो सामने है, श्लोक नंबर 3.3. ओके प्रभु जी. श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं. Oh, I am sorry. इसे ज्ञान योग द्वारा. No, correct. Yeah, please go ahead. Yeah. द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा. प्रभुपाद जी की जय. द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग. इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है. सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं. दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है. 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है. 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है. अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित हैं. दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है. अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शन
निकंजन परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो इस श्लोक में भगवान दो तरह के लोगों को बता रहे हैं। वन who want to understand Krishna by analytical knowledge, by philosophical speculation, जो कि सांख्य योग है, जिसमें कि analytical study of nature of spirit and matter, हाँ, ये जो उस पे speculation लोग करते हैं, gradually as they refine, as they become more mature, they are able to distinguish clearly between the matter and the soul, and then they are able to accept, again they are gradually progressing on the path of Krishna consciousness. लेकिन जो दूसरा है, जो डिवोशनल सर्विस है, डिवोशनल सर्विस में the intelligent, why it is more faster and more intelligent, because people, so the person who is going through the process of devotional service, he can directly understand that I am the living entity, I am part and parcel of Krishna, I am the servant of Krishna, and let me engage in his service. So this is a more direct process where the relationship with Krishna is established, and when the relationship between Krishna is established, the living entity, it purifies himself, and then he is able to within this life he is able to go back home, back to Godhead. Within this life he is able to complete his journey of self-realization. Then we will go little faster. 3.4. Then Lord is saying, not by merely abstaining from work. तो भगवान यहाँ पे abstaining from work को condemn कर रहे हैं. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom for reaction. For renunciation alone nor by renunciation alone can one attain perfection. The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of prescribed form of duties which are laid down just to purify the hearts of materialistic man. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of sannyas. So I think आप सबने वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में सुना होगा. So वर्णाश्रम सिस्टम is a gradual process. वर्णाश्रम सिस्टम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कि ब्रह्मचार्य, जिसमें 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं. तो श्रील प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति वर्णाश्रम सिस्टम के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, he cannot directly jump and take sannyas. वो डायरेक्टली उसको नहीं, क्योंकि ये जो वर्णाश्रम सिस्टम का प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन का है. कल श्रील रामानंद रॉय जी का डिसअपीयरेंस डे था और कल हम इस पे पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे थे कल शाम को एक क्लास में कि कई बार लोग सोच लेते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है या अल्टीमेट प्रोसेस है लाइफ का. वर्णाश्रम सिस्टम का मतलब क्या है कि जो 4 वर्ण और 4 आश्रम और इसके अनुसार जो हमारी ड्यूटीज, इसके हिसाब से जो हमारा कर्तव्य है या जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इसमें चारों की एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब की गई है. जैसे कि एक क्षत्रिय का क्या ड्यूटीज है, एक वैश्य का क्या है, एक ब्राह्मण का क्या है, और एक which one I left? क्षत्रिय, शूद्र.
एक शूद्र का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह एक ब्रह्मचारी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गृहस्थ का, एक वानप्रस्थ का, एक सन्यासी का। तो ये जो सारा ड्यूटीज है, अगेन दे आर नॉट गिविंग अस द परफेक्शन ऑफ लाइफ। वर्णाश्रम सिस्टम क्या क्या मतलब है? वर्णाश्रम सिस्टम का मतलब है धीरे धीरे ग्रेजुअली, अगर हम इस वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली वी विल प्योरीफाई आवरसेल्फ व्हेन वी विल कीप अपग्रेडिंग आवरसेल्फ। हाउएवर, वर्णाश्रम सिस्टम इज नॉट लीडिंग अस टू द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, इट इज ओनली प्रिपेयरिंग अस टू बिकम एलिवेटेड इन आवर कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इन द परपोर्ट, ही सेज वो सन्यास के बारे में बता रहे कि खाली सन्यास लेने से, काम को छोड़ने से होगा नहीं। बोले सन्यास जो है तभी लेना होगा जब अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को पूरा करके हमारा जो हार्ट है इट इज ग्रेजुअली प्योरिफाइड। ही सेज विदाउट प्योरिफिकेशन वन कैनॉट अटेन सक्सेस बाय अब्रप्टली adopting the fourth order of life। तो बता रहे कि आप डायरेक्ट अगर सब कुछ त्याग भी देंगे, सब कुछ त्याग के आप कहेंगे हम जंगल में जा रहे हैं, तपस्या करेंगे, इट विल नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट प्योरिफाइड एंड वी विल नॉट बी एबल टू even maintain that situation because our mind and senses are not purified. Again we will fall back into the pool of material existence. In this way, varnashram system is a gradual step by step process and it is not giving us the ultimate it is helping us to move in the ultimate good direction, but it is not the ultimate goal। और आज हम आज का एक श्लोक पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद एक थोड़ा सा I will need 5 minutes of yours because we will start one activity। आप में से कई लोगों का रिक्वेस्ट आया है मेंटर्स के लिए, तो I will just share some information about that। Okay, so now text 5, last shloka for today, और अगली बार फिर हम आगे चलेंगे। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature। Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment। Can someone read the purport in Hindi? कोई पढ़ेगा आप में से हिंदी में? Anjali Mataji, you want to read? Anjali Mataji, are you reading? I can't hear if you are speaking। Ramesh Chandra Prabhu। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, इसका अनुवाद और तात्पर्य प्रभु जी 5वें श्लोक का। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता है। यह शरीर भूत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। फिर श्रीमद् भागवत 1.4.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है।
त्वक्ता स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजनं जन बपू अथ पत्ते ततो यदि यत्र त्वं वा भद्रं भूतमुख्यं किं को वार्थम आत्मो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होती है। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास का या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। धन्यवाद प्रभु जी। Hare Krishna, thank you. So this statement is like the golden and the conclusive statement for today. बहुत ही क्लियरली श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 17 टेक्स्ट में बताया क्या, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर। बता रहे कि दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो वर्णाश्रम से आ रही हैं, जो वर्णाश्रम के हिसाब से, या जो हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हो सकता है कोई व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। एक तो व्यक्ति ऐसा है। और यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है, इफ समवन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं शास्त्रों में वो पूरी नहीं कर पा रहा, या डिवोशनल सर्विस भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, और अगर वो वहां से उसका फॉल डाउन भी हो जाता है, स्टैंडर्ड को वो अच्छे से फॉलो नहीं भी कर पाता है, स्टिल देयर इज नो लॉस और एविल फॉर हिम। On the other hand, if he carries out all the injunctions for purification in the Shastra, what does it avail him if he is not Krishna conscious? It's a very important point to understand कि जो प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है, जो हम वर्णाश्रम सिस्टम से प्योरिफिकेशन को obtain करना चाह रहे हैं, उस प्योरिफिकेटरी प्रोसेस का जो पर्पस है, that is to become Krishna conscious. अगर कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति हॉस्टल में रह रहा है और हॉस्टल में पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में वो सब कुछ हॉस्टल में बहुत अच्छे से कर रहा है, अपने रूम को बहुत साफ से रख रहा है, मेस का मैनेजर बन गया है, और वहाँ की जो फुटबॉल टीम है उसका कैप्टन बन गया है, और कपड़े भी बहुत अच्छे से धुलता है, रूम को बहुत साफ रखता है, ये सब करता है, लेकिन पढ़ाई में फेल हो गया, बीटेक फेल। तो उसका जो ये इतना सारा एक्टिविटीज है, जो उसका क्रिकेट टीम, ऑफ कोर्स उसको उसके हिसाब से जो क्रेडिट थोड़ा जो मिल रहा है, जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन वो जिस पर्पस के लिए आया था, बीटेक क्लियर करने के लिए उसने एडमिशन लिया था, ये तो ऑक्सिलरी चीजें उनके साथ ऐड हुआ था, है ना, या फिर उसकी उस जर्नी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग या सपोर्टिव बना रहा था। लेकिन अगर उसने उस अल्टीमेट चीज को ही पूरा नहीं किया और बाकी सब कुछ हो गया, जैसे कि सब्जी में नमक ही नहीं है लेकिन बाकी सब मिर्च मसाले सब है, विल इट बी टेस्टी? It will not be tasty, correct? So like that. So ये श्रीमद् भागवतम बहुत डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स का एस्टेब्लिश कर रहा है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी ने कृष्ण भक्ति को अपना लिया, बाकी सब कुछ उसका छूट भी गया, या कृष्ण भक्ति को भी बहुत अच्छे से भी नहीं कर पाया, तब भी कोई नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि जहां तक कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी वो कवर करेगा, नेक्स्ट लाइफ में वो वहीं से स्टार्ट करेगा, और वो एटलीस्ट वो उसके अल्टीमेट गोल की ओर आगे बढ़ रहा है।
है ना, और उसको लोअर एनिमलिस्टिक फॉर्म में जाने से बचेगा। लेकिन अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारी ड्यूटीज को गुड्डी गुड्डी बहुत अच्छे से कर भी रहा है, उसको उसको कोई उसका खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ के अल्टीमेट गोल की ओर प्रोग्रेस नहीं करेगा। क्योंकि ये जो प्योरिफिकेशन करना भी चाह रहे हैं वर्णाश्रम सिस्टम से, दैट इज अल्टीमेटली टू ऑब्टेन कृष्ण। कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ इस लाइफ में, और बाकी सारी चीजें हमने सजा बुझा के अच्छे से कर भी लिया, इट इज मोर और लेस लाइक ए फेलियर। इट्स ए फेलियर ऑफ लाइफ। अगर कोई व्यक्ति इस लाइफ में भगवान के चेतना को प्राप्त नहीं कर पाया, so it is exactly like you know, just like we discussed the example of getting admission, बाकी सब कुछ अच्छे से किया और डिग्री ही नहीं किया जो डिग्री करने गए थे। तो इस लाइफ में हमने बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया, जो कि हमें एलिवेट करके कृष्णा कॉन्शियसनेस पहुंचाने के लिए था। हमने उसको तो इतना बिजी हो गए करते हुए, लेकिन जो अल्टीमेट, इसीलिए हम स्टार्टिंग में जो डिस्कस कर रहे थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। आप जो भी कोई प्योरिफिकेटरी एक्टिविटी कर भी रहे हैं, अल्टीमेटली हमें उसको भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। अगर आप फादर हैं, अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, वेरी नाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट train them in Krishna consciousness so that you can so it is said in Srimad Bhagavatam that one should not become a father, one should not become a mother, one should not become a teacher, one should not become a demigod, one should not become a, you know, like that worshipable personality unless one can deliver one's dependent from the repeated cycle of birth and death। बोले किसी को माता पिता, ये भागवतम में श्लोक है, किसी को माता पिता देवता या इस तरह का कोई पर्सनालिटी नहीं गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने डिपेंडेंट्स को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से ना निकाल पाने में सक्षम ना हो, तब तक उसको ये पोजीशन नहीं लेना चाहिए। Because the ultimate purpose of all these activities is to elevate our Krishna consciousness, और वही नहीं हो पाया, then we are like losers. So thank you very much. I wanted to spend some I will take some time. अब हम you know what has happened is that we are discussing, we are there in these classes, but अभी तक हम लोग आप लोग के mentors को assign नहीं कर पाए हैं, and one of the reason is that we are meeting each other with, but we don't know each other so much. तो आप लोगों के लिए एक दो अनाउंसमेंट था। सबसे पहले तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। पूरा देर अगर आपने डिनर विनर सब कर भी लिया है, सब कुछ अपना काम निपटा लिया इस क्लास के दौरान, तो अभी तो कर सकते हैं, है ना। तो so what we will do, next time we will spend more time on this. We will try to know about each other in this class. थोड़ा सा एक दूसरे को जानेंगे, and there are 2-3 things that are pending from my side. एक तो आप सब जो डिवोटीज चाहते हैं आपके मेंटर्स हों कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी में, आपको पर्सनली हेल्प करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, so we will assign those mentors. We have a team of qualified mentors, both Matajis and Prabhujis. कुछ ladies, we have some Matajis, they can guide Matajis. We have some Prabhujis, they can guide Prabhujis. In this way, we will try to make that arrangement for you. But for that, we have to understand and know you, so that we can find a right counselor or right mentor for you. You understand this point? If we will know you, हम आपको अच्छे से समझेंगे तो आपको appropriate, क्योंकि it's a important thing to do. And then we will also know each other. हम एक दूसरे को भी अच्छे से नहीं जानते हैं. Do you agree कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? We just meet on Saturdays and then we go away, right? And then so that is due, that I will do. Then second is आपका चैप्टर 2 का टेस्ट होना है। अब बोल रहे हैं सब लोग, अब ये बात मत बताओ, दिस इज नॉट गुड, बट दिस इज गुड। तो चैप्टर 2 का आप लोगों का टेस्ट है पेंडिंग, तो आप लोग एक डेट डिसाइड करिए। आई थिंक चैप्टर 1 का भी नहीं हुआ ना, इंट्रोडक्शन का ही हुआ था, आई थिंक सो। सो वी विल हैव टेस्ट फॉर चैप्टर 1 and 2. Date will be suggested by you. Today is what is the date? Today is 21st, I think. 21st. Okay. Can we
take this test on after 15 days ताकि आप लोगों को preparation time मिल जाए? Let me check the calendar. Can we take this test on 4th of June? आप लोग तैयार हैं? How will we know? Can you raise your hand अगर हम ये टेस्ट 4th जून को 15 दिन के बाद, और बड़ा आसान टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, थोड़ा सा सब्जेक्टिव, केवल 4-5 लोग कह रहे हैं. ओके, केवल 12 लोगों ने बोला इतने सारे लोगों में से. Oh, someone is saying today is my first day. No problem. You may skip the test. Aditi Upadhyay ji, thank you. Thank you for your question. Only this many people. Okay, Manish ji, you also first day. Okay, welcome to this program. Okay, अब यहाँ. Okay, कुछ लोग बोले 4th June is fine. Okay, Shilpa Mata ji, thank you for confirming. So let us then fix it for 4th June. कई लोगों को आज फर्स्ट टाइम आए हैं. सो आई होप आप लोगों को मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है, तो आप में से जो खास तौर से जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कैन वी नो अबाउट यू प्लीज? आई सॉ, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड say about yourself? Manish Prabhu, if you are here. Manish, I'm not able to see you where you are. Can you, one second, I lower all the hands. Manish Prabhu, are you here? Can you please speak out? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? Now I can. Yes. Now I can see you also. Would you like to introduce yourself? What do you do? Where do you live? Myself Manish Kumar. I studied Gamma 2. I'm a physiotherapy student. Oh, today is the first class for you? Yeah. Okay. How did you find it? Was it relevant for you? Was it little complex? Yeah, it was relevant and it was easy to understand the way you have explained everything. So you are becoming doctor of physiotherapy, is that? Yeah. Okay, very nice. I stay in Alpha 1. We can meet sometime. Yeah, मैं आता हूँ अभी 2 दिन से नहीं आ रहा हूँ, मैं डेली आता था शाम. Oh, very nice. Thank you. And then we also had, so abhi jo, thank you Manish Prabhu, and we have some more devotees also, but first we want to now start knowing about those who are already in this class for a long time. So can we know 5 people today? आज हम 5 लोगों को जाने, है ना? Are you okay with that? So can we start with who? We can start with okay, Nikita Mataji wants to go. Yes, Mataji, please tell us. With, I don't know actually where you stay, what you do. So you can take 2 minutes to tell about yourself, and yeah. Yes, Mataji, your stage. Oh, sorry. You can unmute yourself. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. Yes. मैं अहमदाबाद सिटी से हूँ, गुजरात स्टेट से, and I am chartered accountant by profession, and मेरी जॉब गांधीनगर गवर्नमेंट जॉब थी GSTC में, but now I have resigned from the job and I want to go ahead on spiritual level, and even I am alone in my life, means I don't have any responsibilities like that. I am staying with my father, and so I want a mentor for further guidance in Krishna consciousness. Wow, very nice. So you are available for further advancement, and I am very much glad to hear your desire for spiritual advancement. Can I ask you, Mataji, how is your experience of these classes so far? Very good experience. Okay. We will also take your feedback, ताकि आपसे हम feedback से पूछ भी पाएं, so that we can make it better. It is little, of course there is lot of scope of improvement, I personally feel, and we will do that gradually, but I sincerely thank you. I think you have been in all the classes on time and with camera on, so my sincere thanks to you. आपको बहुत धन्यवाद. You are actually since last month I have attended the classes, and it has changed my life actually. I am very much happy. I like to read Bhagavad Gita daily, and it has changed my entire my goal of life. Wow. And even
when we feel that your nature is being changing gradually and you are more conscious on Krishna. Wonderful. So happy to hear this. This is the best possible thing that can happen in our life. That we are more remembering Krishna, more, you know, as you said, we are more conscious of Krishna in activities. Very nice. So thank you, Mataji. हम सब माताजी को thanks करते हैं. And we thank by, you can also unmute and say Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Everyone can say Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Hari Bol. Bol. Thank you. Thank you, Mataji. So we have someone from Ahmedabad, Gujarat. Mataji is from Gujarat. Okay. Are you Gujarati also? Yeah. Sorry, you are muted. I am Gujarati, Prabhuji. We are Vaishnav and we have Vaishnav religion on. We follow Vaishnav religion. Very nice. Thank you. We will learn Gujarati from you then. Okay, sure, Prabhuji. My sister, she stays in Surat. Of course, it's little distance from there. But yeah. But yes, in Ahmedabad, we have very nice ISKCON temple. And I hope you will be visiting it, or you already are visiting it. So thanks a lot. Then we go to Ramesh Chandra Prabhu. Prabhuji is also one of the most sincere participants. तो हम उनको भी थोड़ा सा जानते हैं. आप लोग प्लीज रहिएगा. ये बहुत अच्छा है एक दूसरे को जानना, अगले डिवोटीज को जानना. It will make us stronger together. And then हम सब एक कभी यात्रा में जाएंगे तो we will not. And even for ग्रुप एक्टिविटीज, अभी आप लोगों का ग्रुप एक्टिविटी भी शुरू होगा. आप लोगों को ग्रुप्स में कुछ प्रेजेंटेशन देना होगा. अभी बहुत दिन से मैं ही बता रहा हूँ, अभी आप लोगों का भी कुछ काम शुरू होने वाला है. तो इसलिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है. यस, रमेश चंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. स्टेज इज योर्स. यस प्रभु, हरे कृष्ण. मैं मैकेनिकल से इंजीनियर हूँ, बीटेक. और तो मैं जो प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ अभी, तो मेरा जो कृष्णा कॉन्शियस में आने का जो रीजन था, काफी कंफ्यूजन रहता था कि लोग काफी अलग अलग तरह की बातें करते कि भगवान ये भगवान उस तरीके से, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता था कॉन्सेप्ट. तो फिर एक दिन आपके यहाँ से ISKCON में गया था मैं, डेल्टा 3 में. हम जब प्रवचन सुना तो लगा कि हाँ, रियल चीज तो मतलब यही है. तो उसके बाद से मैं इसमें जोड़ा कि हाँ भाई, कृष्ण से आप विमुख नहीं हो सकते, कृष्ण के साथ ही रह सकते हैं. तो ये जो था हमारा जोड़ने का. वेरी नाइस. और आप ग्रेटर नोएडा में रहते हो, राइट? नैनीताल में बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड नैनीताल से बिलोंग करता हूँ. ओके. और अभी आप जॉब में हैं प्राइवेट कंपनी में, राइट? प्राइवेट कंपनी में जॉब में है, ग्रेटर नोएडा में अभी सिचुएटेड हूँ. ओके, वेरी नाइस. आपको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि आप बहुत ही पूरा अटेंशन के साथ बैठते हैं क्लास में, और काफी अच्छा, मुझे काफी अच्छा लगता है. एंड इट इज सो नाइस. एंड आर यू चैंटिंग ऑल्सो हरे कृष्णा महामंत्र? हाँ, पर पूरा ऐसा नहीं होता. कभी 108 कर लिया, कभी कुछ कर लिया, इस तरीके से करते हैं. ओके, so maybe we can meet sometime. आपके can meet and take प्रसादम together. ग्रेटर नोएडा में जो है उनसे तो मिल सकते हैं आसानी से. NCR में जो है, गुजरात में तो थोड़ा दूर है. But those who are in Greater Noida, we can meet. Okay, very nice, Prabhu. So big thanks to you. And you can also visit here. And Alpha 1, normally I'm here when I'm not going to office. So we can meet and talk and take prasadam like that. Who else is in your family? आपके फैमिली में? My wife और 2 बच्चे. Okay. Okay. बड़ी बेटी 10th में है, छोटा बेटा 8th में है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, में से तो स्केटर है. Okay. Okay, he's a skater. Okay. Yeah. Okay. Very nice. Thank you. My regards to all your family as well. So thank you, Prabhu. So very happy to see. तो सब लोग प्रभु जी के लिए हरि बोल बोल सकते हैं. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. ठीक है. अब next, who wants to go next? Shopil Goel Prabhu, you want to go next? Yes, Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. प्रभु जी, मैं अभी बिजनेस में हूँ. मैं फादर का बिजनेस मैंने संभाला है. आई थिंक 7-8 इयर्स हो गए हैं मुझे संभालते हुए. मैंने स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है. एंड
और मैंने लास्ट ईयर से ज्वाइन करा है इस्कॉन। मेरे फादर बहुत डिवोटी रहे हैं, आई थिंक पास्ट 10 ईयर से, तो मैं थोड़ा थोड़ा फॉलो करता था। बट लास्ट ईयर जब मैंने देखा कि भाई सडनली लोगों की मतलब लाइफ चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता, कहाँ वैनिश ही हो जाते हैं एक तरीके से। तो मैंने लास्ट ईयर से ना भगवत गीता पढ़नी शुरू करी। तो मैंने उसमें देखा कि हम लोग लगे हुए हैं, वर्क करे जा रहे हैं, अर्न करे जा रहे हैं, वो सडनली बंदा चले जाता है कहीं भी, एंड यू मतलब सडनली सब कुछ हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है? तो मैंने आपकी क्लासेस करी, कुछ मैंने भगवत गीता जब पढ़ा तो मैंने देखा इसका क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे। तो मतलब मेरे को और अच्छा लगा जानने के लिए कि मैं और जानूं इन चीजों को। तो मैं अच्छा काफी अब जाने लग गया हूँ इस्कॉन, एंड आई डू 5 माला। आई स्टार्टेड विद 1 तो एवरी मंथ Wow. आई इंक्रीज बाय 1। Where do you stay, Prabhu? I stay in Gurgaon, Prabhu ji, sector 15. Oh, are you going to our temple in Gurgaon or? Yes, Prabhu ji, I go to sector 45 and also Badshah 1. Oh, we have a small mantra meditation center in U Block. You know U Block near Cyber City. I know the address, Prabhuji, but I don't know about the meditation part. मेडिटेशन सेंटर है साइबर सिटी, यू नो साइबर सिटी, उसके पीछे ही Yes. यू ब्लॉक है. सो ठीक है Prabhuji. बट वेरी नाइस. सो आर यू रेगुलर पार्टिसिपेंट इन दिस क्लास और? Yes, Prabhuji. I was last time I didn't attend, but major I attend, try to attend. Very nice. And can you tell something about your family? Means you told about your father. I'm married and I have a small son of 1.5 years. Okay. And what is your business? I am into dairy products, Prabhuji. Oh, Krishi Goraksha. Yes. We visit Goshala on Ekadashi. Oh, very nice. So what we will try to do in this class, we will also try to assign some mentors, you know, for those devotees who will like to have, you know. So I don't know how to, maybe I can keep asking, like Nikita Mataji said already. And Ramesh Chandra Prabhu, should we assign some mentor for you? Would you need to have? प्रभु जी. Okay, ठीक है. So I am taking some notes. जब आप लोग बोल रहे हो, तो I am also taking some notes because mentor should be a person which is more, you know, he can more relate to you. तो इसलिए मैं ये भी लिख भी रहा हूँ. So thank you Ramesh Prabhu and Shopril Prabhu. Would you like us to also appoint some mentor for you to assist you? Prabhuji, that would be great. Okay, okay, project. So I have taken your details as well. So I'll do that. So thank you, Shopil, for very happy कि आप 5 माला जप करते हो और टेम्पल भी जाते हो, गौशाला भी जाते हो, काउ प्रोडक्ट्स भी वो करते हो. So I am so happy and you are coming regularly. So प्रभु जी को भी हम थैंक्स करेंगे हरि बोल बोल के. Everyone can unmute and say हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. Two more devotees. आज हम 2 devotees को और जानेंगे और उसके बाद फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे. जाइएगा मत, ये devotees से मिलना बहुत important है, right? So who will go next? Okay, we already have a hand raised. Shilpa Mataji. Okay, yes Mataji, most welcome. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माताजी. मैं बेसिकली भिवाड़ी में रहती हूँ. इंडस्ट्रियल एरिया है और गुड़गांव से अराउंड 40 किलोमीटर्स है एक्चुअली. Yes. तो ये दिल्ली और दिल्ली नहीं, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे है एक्चुअली. तो इट्स नॉट दैट मच डेवलप्ड, अभी स्मॉल टाउन ही है, बट एनसीआर में आता है ये भी. तो मैं एज ए टीचर आई वाज वर्किंग अर्लियर. फिर मैंने जैसे आपको बताया था, फिर आई वाज इनटू स्टडीज. फिर मैंने अभी अपना नेट क्लियर किया. अभी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी आल्सो. Yes. और मेरा मोस्टली स्टडीज का ही रहता है. एक्चुअली मेरे फादर इस्कॉन से जुड़े हुए थे. Okay. इसलिए मेरा राय, ही वाज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. मतलब वो काफी बुक्स एंड ऑल सब पढ़ते थे. हम लोग को बचपन से सब सिखाया कि ये करो, मेडिटेशन करो एंड मंत्र उच्चारण ऑल दैट, वो हम सब का था. इसीलिए मैं इसमें आई.
कि मुझे भगवत गीता पढ़ना है एंड ऑल। रामायण मैंने पूरी पढ़ी। माय मदर इज आल्सो, वो भी भगवत गीता पढ़ती हैं। जो भी आते हैं टीवी पे भी अगर आते हैं भगवत गीता वगैरह का कुछ तो पूरा सुनती हैं। तो कहीं पे कुछ होता है तो भी जैसे चल रहा हो पाठ वगैरह तो वो अटेंड करती हैं। और तो मैं यहाँ रहती हूँ अभी। तो मैं जॉब नहीं कर रही, पहले मैं जॉब करती थी। और जॉइंट फैमिली में हूँ मैं इन लॉज रहते हैं साथ में। माय हस्बैंड इज अ सीए और 2 किड्स है मेरे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। माय सन इज 18 ईयर्स ओल्ड। अभी वो बेंगलोर में स्टडीज कर रहा है, बीबीए कर रहा है। यस। एंड डॉटर इज 10 ईयर्स ओल्ड, तो स्कूल में है। वंडरफुल, वेरी नाइस। आई थिंक इन वन गो आपने सब कुछ बताया बहुत अच्छे से। वेरी नाइस। सो यू लुक लाइक ए टीचर एंड यू कैन गिव नाइस लेक्चर्स। एंड यस, सो वी नीड सो मेनी टीचर्स इन दिस डिसिप्लिन। अगर आप में से सब लोग इस भगवत गीता को पढ़ाएंगे लोगों को सेल्फलेसली, तो कितना अच्छा होगा, कितने सारे लोगों को लाइफ में सही डायरेक्शन मिलेगा, है कि नहीं? सो रमेश चंद्र प्रभु पढ़ा सकते हैं, निकिता माता जी, शोप्रिल प्रभु, सब जो इसको सीरियसली पढ़ लेंगे एंड दे कैन सीरियसली टीच ऑल्सो। इट्स it takes some experience, it takes some, of course, but then if we are sincere, we can make it faster. So I will thank you. And are you chanting, Mataji? Are you chanting Hare Krishna Mahamantra? एक्चुअली मेरा या रोज नहीं हो पाता, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ। तो अभी हम लोग, मैं ये भी सोच रहा था एक स्पेशल सेशन रखेंगे। आई विल ट्राई टू रिक्वेस्ट ए स्पेशल स्पीकर। वी हैव हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा महाराज। आई विल ट्राई कि वो इस एक स्पेशल सेशन लें चैंटिंग के ऊपर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैंटिंग को, अभी हमारी क्लास में सब कुछ मतलब एक तरह से ठीक चल रहा है, लेकिन हम लोग चैंटिंग हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप सब हरे कृष्ण महामंत्र के चैंटिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे शीतल माता जी हैं, आई कैन सी हर, शी इज फ्रॉम गुड़गांव MMC एंड शी इज चैंटिंग। आई होप माता जी आर यू चैंटिंग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी लास्ट 1 मंथ से जब हम आपको लास्ट मिले थे 19th of April, तब से मम्मी और मैं डेली 16 माला कर रहे हैं। ओह वंडरफुल, अमेजिंग। एंड हम लास्ट 1 मंथ में 3 बार दिल्ली वाले इस्कॉन टेम्पल भी गए। वाओ, दैट इज तो रियली अमेजिंग। फर्स्ट टाइम था लाइफ में। Yes, I met you once there. Yeah. Thank you. We'll just complete Shilpa Mataji and then we come to you, Sheetal Mataji, just quickly. So Shilpa Mataji, any feedback for these sessions? आपको कुछ चीज जो inconvenient बताया था, जब से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू करा है तब से पॉजिटिव चेंजेस आर देयर इन माय लाइफ। मतलब आई एम फीलिंग कि जो सब हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। And yes, I think, I don't know, around 10 years back, 10 or 12 years back, I've been to Mathura and Vrindavan also. The ISKCON, I visited ISKCON also. काफी टाइम हो गया अब तो उस बात को, उसके बाद नहीं हुआ मेरा जाना। बट हाँ, यस, आई लाइक द प्लेस वेरी मच। और वहाँ पे और वृंदावन में और 2-3 टेम्पल्स थे तो मैं वहाँ गई थी। Sure. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो हम लोग को कुछ एक टूर प्लान करना चाहिए सब ग्रुप के साथ, सम टाइम टू मे बी वृंदावन, या फिर तो आप लोग को दूर से, इसलिए हम पहले उसका डेट फिक्स कर देंगे 2 महीना पहले। तो आप लोग आ जाइएगा, निकिता माता जी अहमदाबाद से आ जाएंगे, यू कम फ्रॉम भिवाड़ी एंड वी कैन ऑल गो टुगेदर। इज इट नॉट गुड आइडिया? ओके, क्योंकि सब साथ में जाएंगे, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस गोइंग टू वृंदावन, सो वी विल बी देयर। Okay, and thank you so much, Shilpa Mataji. Let us all thank her by saying Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. And today's last introduction is Sheetal Mataji. Let us hear from her. And here she is. Yes, Mataji. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अभी लास्ट 1 मंथ से ही जुड़ी हूँ। जब हमारे यहाँ पे यू ब्लॉक में MMC का हमें पता चला, हम क्रॉस कर रहे थे और हमें आवाज सुनाई दी कीर्तन की, और हमने झांक के देखा और वहां पे विकास जी थे। उन्होंने कहा आप अंदर आ सकते हैं। तो हम ऐसे ही मम्मी और मैं अंदर एंटर किए, और हमें खुद नहीं पता था कि हम आगे मतलब क्या अनुभव करने वाले हैं। तो अभी लास्ट 1 मंथ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है।
चाहे अभी बीच बीच में जैसे हम भगवत की क्लासेस लास्ट वीक से हमने ये ऑनलाइन वाले सेशंस में ज्वाइन करा है, उससे पहले हम लोग यहाँ ऑफलाइन सेशन में भी अटेंड कर रहे थे। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक मुझे लगता है कि सही बात है, मुझे लग रहा था जो फर्स्ट 3 डेज में हमने सेशन अटेंड किए थे ऑन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वो एक्चुअल में होते हुए दिख रहा है कि कहीं हमारा जो नजरिया है वो पहले से फर्क हो रहा है और वो पॉजिटिव हो रहा है। और वो ध्यान रहना कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो कृष्णा से कैसे जोड़ना है। पहले समझ ही नहीं आता था कि कैसे सोने को भी हम कृष्णा के उससे जोड़ सकते हैं, पर जब हमने सेशंस अटेंड किए तो बहुत ही एक मुझे लगा कि अवेयर हुए हैं हम। और अब हर पल ध्यान रहता है, चाहे हम ऑफिस में काम ही ना क्यों कर रहे हो, या हम मेट्रो में ट्रैवल क्यों ना कर रहे हो, या हम चल के कहीं जा रहे हैं मार्केट, तो ध्यान में रहता है, वो मन में वो मंत्र उच्चारण होता रहता है। और हम कोशिश कर रहे थे। और डेफिनेटली मुझे आपकी बात ध्यान आती है कि जब आपने स्टार्टिंग में पूछा कितनी माला आप कर रहे हैं, तो मैं हर बार 3-4 दिन तक एक माला बोल रही थी। और मेरे को अंदर से था कि हमें ग्रेजुअल बढ़ाना तो है, पर वो और आप कह रहे थे, एग्जाम्पल्स भी शेयर कर रहे थे कि अगर हम करेंगे, डिजायर होगा तो वो मुमकिन होगा। एंड वन इज एक्चुअली एबल टू एक्सपीरियंस दैट, कि अगर हम कोशिश करते हैं तो वो रूटीन के अंदर इंक्लूड होता ही होता है। तो और इसके अलावा मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ जो कि डिसेबल लोगों के मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर फोकस करता है। सो हम लोग यू ब्लॉक गुड़गांव में रहते हैं, मम्मी और मैं रहते हैं। वेरी नाइस, सो ग्लैड टू सी यू इन दिस क्लास। और थोड़े दिन पहले हम मिले थे शीतल माता जी से एंड हर मदर, आई थिंक उनकी मदर का नाम रमेश माता जी, इफ आई रिमेम्बर। आई एम वेरी पुअर इन रिमेम्बरिंग द नेम्स, बट शी इज वेरी काइंड। तो ये हमारे जो गुड़गांव में एक छोटा सा मंत्रा मेडिटेशन सेंटर है, जो अभी मैं उनको बता रहा था प्रभु जी को, तो उसके बिल्कुल ही पड़ोसी है, मतलब 2-3 घर छोड़ के हैं। और इन्होंने जैसे बता रहे, एक दिन वो सेंटर में आए, आवाज सुना कीर्तन का, और फिर वो आए और फिर उन्होंने अभी इतना जल्दी में 16 राउंड्स चैंटिंग शुरू कर दिया है। ओ माता जी इज आल्सो हियर। ओके रमेश, मैं बैठी हुई थी अभी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, वेलकम। आज मैं आपको बिना मास्क के पहली बार देख रहा हूँ, पहले हमेशा मास्क में। तो अब हम कहीं मिलेंगे तो आप हमें पहचान जाएंगे। यस यस, पहले हमेशा मास्क में देखा मैंने आपको। सो नाइस, सो हैप्पी। माता जी आप भी 16 राउंड्स कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो डिवोटीज धीरे धीरे हम लोग एडवांस कर रहे हैं, तो ये चैंटिंग जो है अभी हमें धीरे धीरे, और आई थिंक नेक्स्ट टाइम या हम एक चैंटिंग पे सेशन कर लेते हैं, हमें उससे फिर क्लियर होगा कि सारी एक्टिविटीज में, भक्ति की सारी एक्टिविटीज में चैंटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। तो ऐसा एक काइंड ऑफ मतलब हम वो कर सकते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्लास के जो पार्टिसिपेंट्स हैं एटलीस्ट वो 8 राउंड्स या 4 राउंड्स, मिनिमम 4 राउंड्स वो चैंट करें डेली। तो उससे क्या होगा, वो जर्नी हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि ये अभी नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज के साथ में फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, राइट? गेटिंग नॉलेज इज वी आर हियरिंग कि हमें कृष्ण को स्मरण करना है, कृष्ण को नाम को चैंटिंग करना है, कीर्तन करना है, एंड द एप्लीकेशन इज टू डू इट, राइट? सो इन दिस वे वी विल ट्राई कि फॉर दिस ग्रुप डिवोटीज कि वो जैसे माता जी लोग तो 16 राउंड में बहुत जल्दी आ गए, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट, सो इट इज अ गिफ्ट फॉर मी टुडे, बट फॉर अदर्स ऑल्सो हम समय निकालेंगे और समय निकल जाएगा। जैसे माता जी भी जॉब में है, शीतल माता जी, वो जॉब में होते हुए भी वो डेली जाते हैं, दिल्ली जाती है वहां से, और एंड शी इज चैंटिंग 16 राउंड, शी इज फाइंडिंग दैट टाइम। तो टाइम मिल जाएगा, अगर हमें कुछ लाइफ में इंपॉर्टेंट करना होता है तो उसके लिए टाइम मिल जाता है। सो मे बी ऑल ऑफ अस कैन स्टार्ट चैंटिंग, जो भी नहीं कर रहे, मे बी नेक्स्ट क्लास में हम चैंटिंग पे ही पहले थोड़ा सेशन करते हैं, क्योंकि मुझे ये बार बार फील होता है कि एक मेन एक्टिविटी हमारा भी मिस हो रहा है, जो कि चैंटिंग है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो नेक्स्ट टाइम मे बी मंत्र मेडिटेशन के ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। सो आई थिंक टाइम इज running fast, but we had very good introduction with 5 devotees. आप सब भी जाने, हम सब भी एक दूसरे को जाने, and next time we will meet another 5 devotees. तो next time कौन होंगे वो आप रेडी रहिएगा, साकेत प्रभु एंड
Patil Prabhu, Dr. Patil, and whoever, Sri Nalani ji, and we will like to know more. So thank you very much, and attendance शायद आपने लगा दिया होगा, and we will ऐसे अब धीरे धीरे. अच्छा माता जी, you will need mentors also, शीतल माता जी. Yes, we can have. ओके ठीक है, तो मैंने ये सबका नोट कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स, और हम आपको साथ में मेंटर्स फिर असाइन कर देंगे सून, एंड देन कीप इन टच. सो थैंक यू वेरी मच. वी स्टॉप हियर फॉर टुडे. इट्स ऑलरेडी क्वाइट लेट. थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. हरे कृष्णा. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. जय जय. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.